Question 401. The book Genera Plantrum was written by Engler and Pruntle, Bentham and Hooker, Bessie Hutchinson. Correct answer is option B. Bentham and Hooker were the authors of book Genera Plantrum. Question 402. The term new systematics was introduced by Bentham and Hooker, Linnaeus, Julian Huxley, A.P.D. Condell. Correct answer is option C. Julian Huxley introduced the term new systematics in 1940. Question 403. Select the wrong statement. Option A. The wall of diatoms are easily destructible. तो ये ऑप्शन ए ही रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि जो डाइएटम्स की वाल हैं ये सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग होती हैं एंड दे कैन नॉट बी ईजीली डिस्ट्रॉयड. Question 404. Which one of the following show coiled RNA and capsomere? Poliovirus, tobacco mosaic virus, measles virus, retrovirus. Correct answer is option B. Tobacco mosaic virus shows coiled RNA strand and coiled capsomere. Question 405. Pigment containing membranous extensions in some cyanobacteria are pneumatophore, chromatophore, heterocyst, basal bodies. Correct answer is option B. Chromatophore are pigment containing membranous structure present in cyanobacteria and they are responsible for photosynthesis. Question 406. Which one of the following also acts as catalyst in bacterial cell? 5S ribosomal RNA, snRNA, hnRNA, 23rd S ribosomal RNA. Correct answer is option D. 23rd S ribosomal RNA is a smaller subunit and it acts as a catalyst in bacterial cell. Question 407. Bacterial leaf blight of rice is caused by a species Alternaria, Arvinia, Xanthomonas, Pseudomonas. Correct answer is option C. Xanthomonas oryza species cause bacterial leaf blight of rice disease. Question 408. Escherichia coli is used extensively in biological research as it is easily cultured, easily available, easy to handle, easily multiplied in host. Correct answer is option A. Escherichia coli is extensively used in biological research क्योंकि इसका जो जीनोम है वो स्मॉलर इन साइज है और ये easily cultured होता है. So correct answer है option A. Question 409. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gametes require birds, water, wind, insect. Correct answer is option B. Bryophytes and pteridophytic plants require water for the transport of male gametes. Question 410. Which one of the following statement is wrong? Option A. Chlorella and spirulina are used as a space food. तो ये correct statement है. Option B. Mannitol is stored food in rhodophyceae. Option C. Algin and carrageenan are product of algae. agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. तो इनमें जो incorrect statement है, wrong statement है, वो है option B. मैनीटोल स्टोर्ड फूड है ब्राउन एल्जी या सीवीड्स के अंदर, जबकि रोडोफाइसी में जो है वो मैनीटोल स्टोर्ड फूड नहीं है. क्वेश्चन 411. मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड इन एक्टोकार्पस, स्पायरोजाइरा, पॉलीसाइफोनिया और एनावाइना. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. एक्टोकार्पस के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड हैं. क्वेश्चन 412. लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. एक्टोकार्पस का जो लाइफ साइकिल है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जबकि फ्यूकस का लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक है.
Question 413. Which one of the following plant is monoecious? Pinus, cycas, papaya, marchantia. Correct answer is option A. Pinus is a monoecious gymnospermic plant. Question 414. Which one of the following pairs of plants are not seed producers? Option A, fern and funaria and ficus and clemadomonas, funaria and pinus. Correct answer is option A. जितने भी सीड प्रोड्यूसर्स हैं वो स्पर्मेटोफाइट से बिलोंग करते हैं, जबकि फर्न और फ्यूनेरिया जो है, फर्न एक आपके पास स्ट्रीटोफाइटिक प्लांट है, जबकि फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइटिक प्लांट है, और ये दोनों सीड प्रोड्यूसर नहीं हैं। Question 415. Which one of the following statement about cycas is incorrect? Option A, it has circinate vernation. Option B, its xylem is mainly composed of xylem vessel. Its root contains some blue-green algae. It does not have well-organized female flower. तो इसका जो करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग साइकस वो ऑप्शन बी में है, क्योंकि साइकस का जो जाइलियम है उसके अंदर वेसल एब्सेंट होते हैं, और साइकस एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, और सारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो है उनके जाइलियम में वेसल एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट नीटेल्स आर्डर के जो प्लांट हैं, जबकि साइकस जो है वो साइकाडेल्स आर्डर से बिलोंग करता है, और इसके जाइलम में भी वेसल क्या होगी, एब्सेंट होगी। क्वेश्चन 416. One of the representative of phylum Arthropoda is pufferfish, flying fish, cuttlefish, silverfish. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिल्वरफिश एक इंसेक्ट है और ये फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। क्वेश्चन 417. Which group of animals belong to the same phylum? Option A, prawn, scorpion and locust, sponge, sea anemone, starfish, malarial parasite, amoeba and mosquito, earthworm, pinworm and tapeworm. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, prawns, scorpions and locust. They all belongs to the same phylum Arthropoda. Question 418. Which one of the following pair of animal comprises jawless fishes? Mackerel and rohu, lamprey and hagfishes, guppies and hagfishes, lampreys and eel. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, लैम्प्रेज और हैगफिश जो है ये जॉलेस फिशेस हैं। Question 419. Biradial symmetry and lack of nidoblast are the characteristic of hydra and starfish and sea anemone, Tinoplana and bere, Aurelia and paramecium. Correct answer है ऑप्शन सी, Tinoplana and bere belongs to the phylum Tinophyra and they have biradial symmetry and they have no nidoblast cells. Question 420. What is common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis and Giardia? Option A, these all are parasites. These all are unicellular protists. They have flagella. They produce spores. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ये सारे ट्राइपेनोसोमा, नक्टिल्यूका, मोनोसिस्टिस एंड जियार्डिया, इनमें कॉमन ये है कि ये सारे यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट हैं। क्वेश्चन 421. Which one of the following is not found in birds? Pelvic girdle, pectoral girdle, hind limbs, forelimbs. करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी, बर्ड्स के अंदर फोर लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, तो फोर लिम्स जो है वो बर्ड्स में प्रेजेंट नहीं होते। क्वेश्चन 422. कार्टिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड कोलिप्टाइल, स्क्योटिलम, प्लोम्यूल, क्लोरिजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मेज ग्रेन के जो कार्टिलेडन्स हैं उनको नाम दिया जाता है स्क्योटिलम का। क्वेश्चन 423. Tricarpillary Syncarpus gynoecium is found in the flower of Fabaceae, Poaceae, Liliaceae, Solanaceae.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। लिलियसी फैमिली के अंदर जो गाइनोशियम होती है वो ट्राइकार्पिलरी और साइन कार्पस टाइप है। क्वेश्चन 424, Cymose inflorescence is present in Solanum, Sesbania, Trifolium, Brassica. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सोलनम प्लांट के अंदर जो है वो फ्लावर में साइमोस इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है, जबकि सिस्बानिया और ट्राइफोलियम में रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस होती है। Question 425, which one of the following is made up of dead cells? Collenchyma, phloem, phloem, xylem parenchyma. Correct answer is option B, phloem, which is also known as cork cell, and these are made up of dead cells when they becomes mature. Question 426, meristematic tissue responsible for increase in girth after a trunk is intercalary meristem, lateral meristem, और phalogen और apical meristem। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, lateral meristem और responsible for increase in girth of tree trunk। Question 427, the turga, sterna and pleura of cockroach body are joined by arthroidal membrane, cartilage, cementing glue or muscular tissue। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, turga, sterna and pleura are the parts of cockroach body and they are joined with each other by means of arthroidal membrane। Question 428, mast cells of connective tissue contain vasopressin and relaxin, heparin and histamine, heparin and calcitonin, serotonin and melanin। Correct answer is option B, mast cells जो कि connective tissue में present होती हैं, they contain heparin and histamine, and these mast cells help in fighting against germs, and they also provide immunity। Question 429, select the wrong statement। Option A, bacterial cell wall is made up of peptidoglycan। Option B, pili and fimbriae are mainly involved in motility of bacterial cell। Cyanobacteria lack flagellated cells। Option D, mycoplasma is a wall-less microorganism। तो इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी, पिलाई एंड फिम्ब्रियाई आर हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन मोटाइलिटी। तो ये मोटाइलिटी की बजाय अटैचमेंट में जो है वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को। Question 430, select the correct matching in the following pair। Option A, rough endoplasmic reticulum involved in synthesis of glycogen, RER involved in oxidation of fatty acid, SER is involved in oxidation of phospholipid, SER is involved in synthesis of lipid। तो इसमें जो मैचिंग पेयर करेक्ट है वो है ऑप्शन डी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है। Question 431, which one of the following statement is wrong? Option A, uracil is a pyrimidine, तो ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, ग्लाइसिन इज़ अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, तो ऑप्शन बी के अंदर जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, क्योंकि जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स हैं वो दो हैं, एक मैथ्योनिन और दूसरा है सिस्टीन। ग्लाइसिन सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। ऑप्शन सी भी करेक्ट है, सक्रोज एक डाइसक्राइड है और जबकि सेलुलोज जो है वो पॉलीसेक्राइड है। Question 432, the size of chlorophyll molecule is head is 15 by 15 angstrom, tail 25 angstrom, head 20 by 20 angstrom, tail 25 angstrom, head 15 cross 15 angstrom, tail 20 angstrom, head 10 by 12 angstrom and tail is 25 angstrom। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, क्लोरोफिल मालिक्यूल का जो हेड है वो 15 by 15 एंगस्ट्रॉम का होता है, जबकि टेल जो है वो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। Question 433,
Which hormone breaks dormancy of potato tuber? Gibberellin, indole acetic acid, abscisic acid, zeatin. Correct answer is option A. Gibberellin hormone breaks the dormancy of potato tuber. Question 434. Which one of the following pair is not correctly matched? Option A. Vitamin B12 deficiency causes pernicious anemia. Option B. Vitamin B6 disease causes deficiency causes confusion. Option C. Vitamin B1 deficiency causes beriberi. Option D. Vitamin B2 disease causes deficiency causes pellagra. तो इसमें जो ऑप्शन करेक्टली मैच नहीं करता वो है डी। विटामिन जो पेलिग्रा डिजीज़ है ये विटामिन B3 या नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, विटामिन B2 की डेफिशिएंसी की वजह से नहीं होती। तो यही नॉट करेक्टली मैच्ड ऑप्शन है। Question 435. Most active phagocytic white blood cells are eosinophils and lymphocytes, neutrophils and monocytes, neutrophils and eosinophils, lymphocytes and macrophages. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर मोस्ट एक्टिव फाइगोसाइटिक WBC. Question 436. Which cranial nerve has the highest number of branches? Vagus nerve, trigeminal nerve, facial nerve, none of these. Correct answer is option A. Vagus nerve is the longest nerve on the body and it has highest number of branches. It has both sensory and motor axon. Question 437. Functional megaspore in angiosperm develops into endosperm, embryo sac, embryo, ovule. करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी। एंजियोस्पर्म में जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो चेंज हो जाता है एम्ब्रियो सैक में। Question 438. Capacitation of sperm occurs in epididymis, vas deferens, female reproductive tract, ratty testis. Correct answer is option C. Capacitation of sperm are the functional, biological, biochemical and physical changes in the sperm, and this capacitation process takes place mainly in vagina and whole reproductive tract of female. Question 439. In human female, meiosis 2 is not completed until uterine implantation, birth, puberty, fertilization. Correct answer is option D. ह्यूमन फीमेल के अंदर जो ओसाइट है वो अरेस्ट होता है मेयोसिस 2 स्टेज पे, मेटाफेज 2 स्टेज मेनली उस पर अरेस्ट होता है और ये अरेस्ट ख़त्म होता है जब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ होता है और उसको फर्टिलाइज करता है। क्वेश्चन 440. Which of the following is incorrect regarding vasectomy? No sperm occurs in seminal fluid. No sperm occurs in epididymis. Vas differentia is cut and tied. Are irreversible sterility. तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। वासेक्टोमी में एक्चुअली वास डिफरेंस को जो है वो काट करके टाई करते हैं, तो इसमें स्पर्म्स जो है वो एपिडिडिमस से बियॉन्ड मूव नहीं कर पाते, तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है बी। Question 441. A disease caused by an autosomal primary non-disjunction is Klinefelter syndrome, Turner syndrome, sickle cell anemia, Down syndrome. Correct answer is option D. Down syndrome is caused due to ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। तो इसमें क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी की वजह से जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है। क्वेश्चन 442. Mechanism that causes a gene to move from one gene linkage group to another is called inversion, duplication, translocation, crossing over. Correct answer है ऑप्शन सी। ट्रांसलोकेशन मैकेनिज़्म के थ्रू जीन एक जीन लिंकेज से एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 443. Fruit color in squash is an example of recessive epistasis, dominant epistasis, complementary genes, inhibitory gene. Correct answer है ऑप्शन बी।
Fruit color in squash is example of dominant epistasis. Question 444. Which is required as inducer for the expression of lac operon? Lactose and galactose, glucose, galactose. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। लैक ओपेरॉन सिस्टम के अंदर लैक्टोज जो है एज ए इंड्यूसर वर्क करता है। Question 445. Removal of RNA polymerase 3 from the nucleoplasm will affect synthesis of transfer RNA, synthesis of hnRNA, synthesis of messenger RNA और synthesis of ribosomal RNA। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज 3 है ये कैटलाइज करता है ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेसिस को। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज 3 को रिमूव करेंगे तो इससे ट्रांसफ़र आरएनए की सिंथेसिस जो है वो अफेक्टेड होगी। Question 446. Analogous structure are result of shared ancestry, stabilizing selection, divergent evolution, convergent evolution. Correct answer is option D. Convergent evolution की वजह से जो है वो analogous structures जो है वो develop होती हैं। Question 447. Peripatus is a connecting link between mollusca and Echinodermata, Annelida and Arthropoda, Coelenterata and Porifera, Ctenophora and Platyhelminthes. Correct answer is option B. Peripatus is an arthropod and it acts as a connecting link between annelids and arthropoda. Question 448. The process of separation and purification of expressed protein before marketing is called downstream processing, bioprocessing, post-production processing, upstream processing. Correct answer is option ए। एक्सप्रेस्ड प्रोटीन को मार्केट से बेचने से पहले उनकी जो प्योरीफिकेशन और सेपरेशन की जाती है इसको नाम देते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। Question 449. Commonly used vector for human genome sequencing are tDNA, BAC and YAC, expression vectors, TA, cloning vector. Correct answer है ऑप्शन बी। ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करने के लिए जो कॉमनली यूज्ड वेक्टर हैं वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम हैं। Question 450. The genetically modified brinjal in India has been developed for insect resistance, enhancing shelf life, enhancing mineral content or drought resistance. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जेनेटिकली मॉडिफाइड ब्रिंजल जो है वो ज़्यादा इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट्स को रेजिस्ट कर पाती है इंसेक्ट अटैक को, तो इसलिए इसको भारत देश में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।